Let us talk about plasmid selection systems. Insertional inactivation is a useful selection method for identifying recombinant vectors with inserts. For example, a fragment of chromosomal DNA digested with BIM-H1 would be isolated and purified. The plasmid PBR322 would also be digested at a single site using the same restriction enzyme, that is BAM-H1, after which both samples would be deproteinized to inactivate the restriction enzyme. BAM-H1 cleaves to give sticky ends, and so it is possible to obtain ligation between the plasmid and digested DNA fragments in the presence of T4 DNA ligase. तो जब आप BAM-H1 से restriction करते हैं, it produces sticky ends. So these sticky ends can be joined. So प्लाज्मिड में भी स्टिकी एंड्स हैं और जो इंसर्ट करना है आपने डीएनए उसमें भी स्टिकी एंड्स हैं, तो ये फिर ज्वाइन कर सकते हैं. The products of this ligation will include plasmid containing a single fragment of the DNA as an insert, but there will also be many unwanted products such as plasmid which has recircularized without an insert, dimers of the plasmid, fragments joined to each other, and plasmid with an insert composed of more than one fragment. तो ये सब कुछ जो है ये भी उसमें मौजूद है और उस के साथ जिसमें कि एक्चुअली आपका फ्रैगमेंट जो है वो जा चुका है. Most of these unwanted molecules can be eliminated during subsequent steps. The products of such reactions are usually identified by agarose gel electrophoresis. The ligated DNA must now be used to transform E. coli. Bacteria do not normally take up DNA from their surroundings, but they can be induced to do so by prior treatment with calcium at 4 degrees Celsius. These cells are then termed as competent cells. Since DNA added to the suspension of cells will be taken up during a brief increase in temperature, which is called heat shock. Plasmids can also be introduced into the bacterial cells by electroporation. Electroporation is a useful process during which the cells are subjected to pulses of a high voltage gradient, causing many of them to take up DNA from the surrounding solution. This technique has proved to be very useful. After a brief incubation to allow expression of the antibiotic resistance genes, the cells are plated onto medium containing the antibiotic, for example ampicillin. So if ampicillin resistant gene is present in the plasmid, these cells will be plated on the plates containing ampicillin. Colonies which grow on these plates must be derived from cells which contain plasmid, since this carries the gene for resistance to ampicillin. Next, the colonies are replica plated using a sterile velvet pad onto plates containing tetracycline in their medium. सो ये कॉलोनी जो है इनको फिर रेप्लिका प्लेटिंग की जाएगी और उसमें ये होगा कि एक वेलवेट का स्टेराइल पैड होगा, उसको आप जो है वो इस प्लेट पे लगाएंगे जिस पे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्लेट है, और इसमें से जब कॉलोनीज जो हैं वो रेप्लिकेट हो जाएंगी, इसके साथ स्टिक कर जाएंगी वेलवेट के साथ, इसको आप एज सच बिल्कुल इसी पोजीशन में लाते हुए दूसरी प्लेट जो कि टेट्रासाइक्लिन जिसमें एंटीबायोटिक है इसके ऊपर लगा देंगे. अब चूंकि आपने इसको बिल्कुल पोजीशन को चेंज नहीं किया तो
जो कॉलोनी जो है वो इस प्लेट पे है, एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट हो गई है उसी जगह पे इस दूसरी प्लेट में. दिस इज कॉल्ड रेप्लिका प्लेटिंग. Since the BAMH1 site lies within the tetracycline resistant gene, this gene will be inactivated by the presence of insert, but will be intact in those plasmids which have merely recircularized. तो चूँकि जहाँ से BAMH1 काटता है DNA को, वही जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है. तो अगर ये कट हो गया और इसमें इंसर्ट आ गया, फॉरेन डीएनए आ गया, तो इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा. अब ये वाले सेल्स जो हैं ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होंगे. और अगर ये फॉरेन डीएनए इंसर्ट यहाँ पे नहीं लगा और दोबारा से जैसे ही उसने काटा BAMH1 ने, ये दोबारा से रीसर्कुलराइज हो गया, तो ये चूँकि टेट्रासाइक्लिन का जीन जो है इंटैक्ट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. इसका मतलब है ये वाले सेल्स जो हैं ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होंगे. Thus colonies which grow on ampicillin but not on tetracycline must contain plasmids with inserts. This illustrates the importance of a second gene for antibiotic resistance in a vector. So इसमें आप देख सकते हैं ये प्लेट जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें एम्पिसिलिन है और इसके ऊपर जो कॉलोनीज ग्रो करेंगी वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है. ये वेलवेटी पैड है, इसको आप इस प्लेट के ऊपर रखेंगे बिल्कुल. उसके बाद ये कॉलोनीज जो हैं वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगी इस वेलवेटी पैड के ऊपर. इसको आप एज सच जो है वो आगे रेप्लिकेट कर देंगे. तो आप देखेंगे जो कॉलोनीज इधर हैं बिल्कुल वही कॉलोनीज जो हैं वो यहाँ पे ग्रो करेंगी इस प्लेट पे, और ये प्लेट जो है इसमें टेट्रासाइक्लिन है. ठीक है, अब जो है आपने इसको रेप्लिकेट किया और फिर इंक्यूबेट किया ताकि देखें कि कौन सी कॉलोनीज इसके ऊपर ग्रो करती हैं. तो आप देखेंगे कि ये देखें कि ये जो कॉलोनी है इसको यहाँ पे ग्रो होना चाहिए था, ये यहाँ पे ग्रो नहीं हुई. इसी तरह ये जो कॉलोनी है इसे यहाँ पे ग्रो करना चाहिए था, ये भी ग्रो नहीं हुई. तो ये दो कॉलोनीज जो हैं ये ग्रो नहीं हुई. इसका मतलब है कि इनका टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो इंटरप्ट हो गया है, इनएक्टिवेट हो गया है. या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इन दो कॉलोनीज के अंदर वो प्लाज्मिड है जिसके अंदर वो डीएनए का पीस जो है वो इंसर्ट हो चुका है. इफ द डाइजेस्टेड प्लाज्मिड is treated with the enzyme alkaline phosphatase prior to ligation, recircularization will be prevented since this enzyme removes the 5' phosphate groups which are essential for ligation. तो ये एक और तरीका है जिससे आप प्लाज्मिड्स की रीसर्कुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं.